Hello everyone, welcome in my YouTube channel. Here we will discuss Maharashtra set previous year's question with its solution. As we have already done some question of June 2019 and that link of videos I will upload in my description. Now let's start with another question. So today we will solve question number 7 of section 1 June 2019. So here question of probability is here simply mentioned coin. The question say that a coin is biased so that head is twice as likely to occur as a tail. If a coin is tossed 4 times, what is the probability of getting 2 tails and 2 heads? That's question of probability. So how can we solve this type of question? This is very simple question. Let's start with that solution. Solution. Here given that a coin is biased so that head is twice is likely to occur as a tail. यहाँ पे हेड दो बार अकर करता है एज कंपेरिजन टू टेल्स. तो लेट्स स्टार्ट. Here given if the coin is biased so that head is twice is likely to occur as a tail. Thus here we have to first think about probability of head and probability of tail कि probability of head क्या होगा और probability of tail क्या होगा, उसके बारे में हम लोग think करते हैं. तो let's say that probability of getting tail is x. Therefore probability of getting head must be twice of tail, so that is 2x. So overall probability क्या होगा? So the probability of getting tails out of both possibilities, head and tail. Probability of tail out of both possibilities. What हो जाएगा? Probability of tail divided by probability of head plus probability of tail. Why we have to do like this? Because question में simply given है कि if coin tossed 4 times, then what is the probability of getting 2 tails and 2 heads? There are lots of question may be created. If say that if question tossed 3 times, then what is the probability of getting exactly 2 tails, at most 2 head? What is the if tossed 4 times, then what is the probability of get 3 heads and 1 tails, exactly 3 tails? So for that question we go through this general proof
या जनरल सॉल्यूशन. So this is very important as a lecture of probability for this type of question. Nothing. So here what will be the probability of so the probability of getting tails out of both possible outcome is क्या होगा? Probability of tail out of uh, both possibilities, head and union tail. So that's become what? Probability of tail, probability of head plus, because these are mutually independent, so that this one become probability of tail x, we let x, and probability of head 2x plus probability of tail x. This become x plus 3x, which is equals to x cancel out and we get 1 by 3. Therefore, which imply probability of tail out of both possibilities is equals to 1 by 3. Therefore, probability of head 1 माइनस 1 में घटा देंगे 2 by 3. नाउ वी विल हमारा सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है, सो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके हर एक टाइप के लिए करेंगे. एज इट इज़ यहाँ पे अगर 2 टेल्स 2 हेड बोला है तो क्या होगा, 3 हेड टेल्स और 1 हेड बोलता है तो क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से सारा पता चल जाएगा. एक पार्टिकुलर के लिए हम लोग नहीं करेंगे, सभी के लिए करेंगे. सो दैट, तो नाउ given tossed 4 times, if a coin tossed 4 times, given let it as n equals to 4, and let y be the number of, हम लोग एक पैरामीटर दे देते हैं हेड्स का सिर्फ, कि नंबर ऑफ हेड्स पे अगर एक हेड आया तो 3 टेल आएगा, 2 हेड आया तो 2 टेल आएगा, 3 हेड आया तो 1 टेल आएगा, 4 हेड आया तो 0 टेल आएगा. तो लेट y बी द नंबर ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स इन n equals to 4 tosses, and given probability of head is equals to 2 by 3 and probability of tail is equals to 1 by 3rd. So now probability distribution. Y for number of heads and probability of that y become, if 0 head then what, if 1 head, if 2 head. और ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे अगर 2 हेड तो 2 टेल आना ही है, तो हम लोग का जो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा वो प्रूफ हो जाएगा. यहाँ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन भी निकाल सकते हैं. 3 and 4. If 0 then what will be the हो जाएगा 4 टाइम C0 probability of tail, probability of, यहाँ पे लिख दे रहे डिटेल से, probability of head का पावर 0, that head का पावर 0, और probability of tail का पावर, अगर 0 है तो वो कितना बार अटेम्प्ट हुआ होगा, 4 बार आया होगा. दैट्स, तो दैट बिकम 4C0 1, दैट एनीथिंग का पावर 0 1, 4C0 दैट 1 by 2 by 3 का पावर 0, 1 by 3 का पावर 4.
ये 1 दैट इज 1/3 का पावर 4. Similarly, for that we get 4c1 2 का पावर 3 का पावर 1/3 का पावर 3. एंड फॉर दैट 4c2 जो हम लोग का आंसर है 2/3 का पावर 2 1/3 का पावर. तो हम लोग इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है. बाकी आप ये भी कर सकते हैं सेम पैटर्न से, ये भी कर सकते हैं. इसके लिए क्या हो जाएगा 4c1 2/3 का पावर 4, प्रोबेबिलिटी का हेड का पावर 4 और उसका पावर 0. दैट्स इसका हो जाएगा. तो इसका क्या होगा जो हमें 2 हेड एंड 2 टेल चाहिए, दैट इज 2 4c2 प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड का पावर 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का पावर 2. दैट बिकम दैट एंड दैट 4c2 बिकम फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 minus 2 2 इंटू 2 का पावर 2 3, ये भी 2 बिकम 4/3 का पावर 4. 4 and 4 cancel, factorial 2 that become factorial 4 3 का पावर 4. 1 3 out cancel out, 1 into 2 into 3 into 4 by 3 का पावर 4. एक 3 out cancel, that's become 1 into 4 2 into 4 and 3 का पावर 3, यानी 4 2 जा 8 एंड 3 का पावर 3 27 जो हम लोग को चाहिए, दैट इज 8/27. एंड रिमेनिंग फॉर दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग. if we ask about no for 4 times such that probability of getting exactly 4 tails, then what we will get 4c0 1 का पावर 3 का पावर 4 यानी 1/81. So this is very important question for probability. Always this type of one question has been asked in all type of entrances like CSIR NET, SET, also in Maharashtra SET. This is question of probability. आई होप कि आप लोग को अच्छा से क्लियर हुआ होगा. ये सेक्शन इम्पोर्टेंट सेक्शन था और वेरी इजी था.